What if I told you that your biggest mistakes could actually be the blessings in disguise? Today, in Day 26 practice, we are diving into magically transforming your mistakes into blessing. It is a powerful practice that converts, that turns regrets into opportunities and setbacks into stepping stones. Stay with me till the end because once you understand this practice, you are not going to be the same again. You're gonna convert all your mistakes into opportunities and find abundance in your life. So let's start with Day 26 practice, magically transforming mistakes into blessings. Day 26 practice magically transform mistakes into blessings. So in this picture, you can see there is a darkness, and then through the magic, to the sprinkles of magic, you are shifting from darkness into light, right? So let's see what all you need to do to transform your mistakes into blessings, to convert your regrets into opportunities. So let's start with Day 26. Turn your wounds into wisdom. Every single mistake is a blessing in disguise, right? Whatsoever mistake we do, whatsoever failure we face is actually a learning. If you take it that way, you're gonna learn a lot and you're gonna go a long way, right? So every single mistake that we do throughout our life is a learning, is a blessing in disguise, correct? Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. It's the universal game, it's the universe game that if something bad is happening, that is something to teach us. We need to understand that. कुछ भी मिस्टेक अगर हुआ है, कुछ भी गलतियां अगर हुई है, वो हमें सीखने के लिए हुई है ताकि हम नेक्स्ट टाइम वो वापस से नहीं करें. Okay? So a child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything and we would not grow any smarter or any wiser. राइट जब एक बच्चा मिस्टेक करता है तो हम ये बोलते हैं कि आप सीखते सीखते ही बड़े होंगे. तो when we grow as adult, why are we so harsh on ourselves? Why do we punish ourselves for doing mistakes? Why do we become so low when we do mistakes? When you fail in any exam, when we fail in any life challenges, why? Why do we do that? इंस्टेड अगर जैसे आप बच्चों को समझा रहे हो वैसे आप खुद भी उस चीज को उसी तरीके से लो कि थ्रू योर लर्निंग यू आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे. किसी ने अगर गलतियां नहीं की तो शायद उसने कुछ ट्राई ही नहीं किया, राइट? ट्राई करते करते ही तो आप सीखोगे. जितना ज्यादा मिस्टेक्स करोगे उतना स्ट्रांग आप बनोगे, इतने स्मार्ट आप बनोगे, उतने वाइज आप बनोगे. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, we have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. तो अगर आपने कोई गलतियां की और आपको उसका पछतावा भी नहीं है एंड इफ यू आर नॉट हर्ट, तब वो गलतियों से आपने सीखा ही नहीं है, इसीलिए वापस से वो रिपीट करने वाले हो. वापस से यूनिवर्स आपको वो मिस्टेक्स करवाएगा. इसीलिए बेटर है कि जब भी गलतियां करो, खुद को तकलीफ हो तो अच्छी बात है, देखो क्या गलतियां हुई, उससे सीखो एंड देन उसको रिपीट ना करो. क्योंकि उन गलतियों को अगर आप रिपीट करोगे मतलब आपने कुछ सीखा नहीं, मतलब आपको एक्चुअली में पेन नहीं हुआ. राइट? टू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक्स वी फर्स्ट हैव टू ओन इट. गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. अगर आपने कोई मिस्टेक किया है उसको एक्सेप्ट करोगे, मतलब एक्सेप्ट करोगे तभी आप सीखोगे. पर अगर आपका ईगो बीच में आ जाएगा तो आपने मतलब सीखा ही नहीं उससे. एंड दिस इज वेयर मेनी पीपल कैन बिकम अंडर बिकॉज दे ऑफन ब्लेम समवन एल्स फॉर देयर ओन मिस्टेक. हमारा ईगो बीच में आ जाता है, हम किसी और को ब्लेम करते हैं. वी स्टार्ट प्लेइंग ब्लेम गेम, चाहे वो बिजनेस में हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, एनीवेयर. तो यही चीज हम करते हैं कि वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स. उससे बेटर है कि आप ओन करो अपनी गलतियों को, एक्सेप्ट करो, अपने ईगो को साइड में रखो एंड देन
you'll see कैसे सब कुछ परफेक्ट होता है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको हर्ट हुआ, आपको रिग्रेट हुआ एंड आपने कुछ स्टेप्स लिए हैं उससे सीख के आगे बढ़ने की. तो आपको यूनिवर्स वापस से रिपीट नहीं करवाएगा उससे आगे सेम मिस्टेक्स. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that you were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We could not see them, they had a radar gun, and we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain. We will still suffer the pain and consequences for our mistake, but we didn't learn from it, and so being we will attract making the same mistake again. राइट. अगर आपने पुलिस को ब्लेम किया मतलब यूनिवर्स आपको वापस से स्पीडिंग टिकट देगी. आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि आप स्पीड में चला रहे थे, आपकी गलती थी. राइट. तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप मान लो कि आपको वापस से वो चीज फेस करना पड़ेगा. राइट. द प्रॉब्लम विद you are human and you will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes, otherwise your life will have a lot of unnecessary pain. तो मिस्टेक्स कर रहे हो तो सीखना जरूरी है. अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको पेन होगा, आपको रिग्रेट्स होगा, आपको प्रॉब्लम होगा. राइट. How do we learn from a mistake? Gratitude. जब भी गलतियां की ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, वो हम सीखेंगे कैसे आप अपनी गलतियों को कन्वर्ट कर सकते हो. नो मैटर हाउ बैड समथिंग मे सीम, देयर आर ऑलवेज मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. व्हेन यू लुक फॉर एज मेनी थिंग्स एज यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर in a mistake, you magically transform the mistakes into blessings. Mistakes attract more mistakes and blessings attract more blessings. Which would you prefer? Right? No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. चाहे कितनी ही बड़ी गलतियां हो, चाहे कुछ भी हो, ग्रेटफुलनेस दिखाने का तो बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिलेगा. तो अगर आप मिस्टेक्स करोगे तो और मिस्टेक्स को अट्रैक्ट करोगे, उसी को आप इमीडिएटली कन्वर्ट कर दोगे ब्लेसिंग्स में, तो आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने लग जाओगे. राइट. तो व्हेन यू लुक फॉर मेनी थिंग्स दैट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर इन अ मिस्टेक, your mistake will transform into blessings very soon. Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts you when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone and because of it you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something and it all went wrong and ended up costing you a lot. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. तो आज आपको कोई भी एक मिस्टेक जो आपने पुराने टाइम पे पास्ट में किया है उसके बारे में सोचना है, जो आपको आज भी तकलीफ देती है. ठीक है. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessing, look for the things to be grateful for. To help you, there are 2 questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? ठीक है? The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. तो जब भी कोई गलतियां हो तो आपको सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड तो ये एक्सप्रेस करना है कि थैंक यू फॉर ऑल द लर्निंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक. करेक्ट. उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती है आप अपना माइंड शिफ्ट कर रहे हो. एंड नो मैटर व्हाट द मिस्टेक, there are always many good things that come out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write down your list in a gratitude journal or type them on your computer. तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, तो आपको बेसिकली जो मिस्टेक आपने निकाला उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स लिखने हैं, 10 पॉइंट्स लिखने हैं. तो क्वेश्चंस आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपने क्या सीखा एंड वो मिस्टेक के बाद क्या क्या चीज हुआ, क्या क्या गुड थिंग्स हुआ आपके लाइफ में. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफ बीइंग कॉट स्पीडिंग बाय पुलिस कार एंड रिसीविंग अ फाइन. कैसे आप एक्सप्रेस करोगे ग्रैटिट्यूड को? I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because after all that was all they were trying to do. स्पीडिंग का क्यों लगाते हैं टिकट? ताकि आप समझो कि आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है. स्पीड करने से, स्पीडिंग चलाने से आपके लाइफ को खतरा है. करेक्ट. उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो. I'm grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road.
I'm grateful for the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced, right? I'm grateful to the police for the wake up call being pulled over. Did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without being caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the road. I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. I'm grateful to the police because all the possible consequences that could have stopped me from my speeding, the police pulling me over was the least harmful consequence and it could have been the biggest blessing of my life. तो आपको इसी तरीके से तो बैड सिचुएशन या मिस्टेक्स को कन्वर्ट करना है ग्रैटिट्यूड में. तो दिस वॉज वन एग्जाम्पल. वैसे ही अगर आपने कोई भी गलती की तो उसके लिए आपको 10 ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स बनाने हैं. आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू टू टेक एनी मिस्टेक्स यू हैव मेड इन योर लाइफ दैट यू स्टिल फील बैड अबाउट, क्योंकि ये स्टक होके रखा है आपके लाइफ में, राइट? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप उस मिस्टेक से निकलो. तो अगर कोई भी मिस्टेक है जो अभी भी आपको खराब फील करवा रही है तो आपको ये चीज करना बहुत जरूरी है. फॉलो दिस मैग्निफिशेंट एंड मैजिकल प्रैक्टिस. थिंक अबाउट इट. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that, right? इसी तरीके से आप कोई भी मिस्टेक को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो थ्रू ग्रैटिट्यूड. तो जो भी मिस्टेक्स है, सपोज आपने एग्जाम में अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, उन सब से जो भी आपने लिखा उसके लिए आपको 10 ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स लिखने हैं, राइट? So this was all about day 26 practice, which is magically transform mistakes into blessings. See, it is so beautiful, right? Because कोई भी regrets, कोई भी painful situation से आप कैसे निकल सकते हो उस बारे में अच्छा सोच के आप इस प्रैक्टिस से आराम से कर सकते हो, right? So what you need to do today is first count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, and thank you, and feel as grateful as you are. Then you need to choose one mistake you have made in your life जिसके लिए आपको अभी भी खराब लगता है, and then find 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. To help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistakes, and what are the good things that came out of it, right? And then before going to sleep, you need to hold your magic rock in your hand and say thank you for the best thing that has happened throughout the day. Okay, so this is a beautiful practice that will actually go throughout your life. जब भी आपने कोई भी गलती की उसको कैसे कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटीज में, राइट? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट डे प्रैक्टिस, विच इज द मैजिक मिरर. थैंक यू सो मच.